Question 1b solve. Sum number 1, are triangles in the figure similar? So two triangles दिया है फिगर में, हमें बताना कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं. इफ़ येस देन राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. ना इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. पहले हमेशा ट्राइंगल का नाम लिखो. इन ट्राइंगल ए बी सी and a triangle PQR. Now find out all the corresponding ratios of the corresponding sides. AB upon PQ. AB upon PQ will get what? AB upon PQ is equal to what? 6 upon 3. It goes in 3 stable. 3 ones are, 3 twos are. So what you got answer? 2 upon 1. Let this be 1. Similarly, the next one you find out BC upon QR. BC upon QR. That's equal to what? 8 upon 4. 8 upon 4. ये 4 की टेबल में जाएगा. 4 ones are, 4 twos are. Answer is what? 2 upon 1. Let this be 2. Similarly, find out AC upon PR. That is 10 upon 5. So AC upon PR. That's equal to 10 upon 5. It goes in 5 stable. 5 ones are, 5 twos are. So you'll get what answer? 2 upon 1. Let this be 3. So from 1, 2 and 3. 1 is also 2 upon 1. 2 is also 2 upon 1. 3 is also 2 upon 1. उसका मतलब AB upon PQ should be equal to BC upon QR should be equal to AC upon PR. So write down that. Therefore, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Reason you'll write what? From 1, 2 and 3. So from 1, 2 and 3 we have got AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by which test? SSS test of similarity. Similarity. So write down the answer. Answer is what? The triangles in the figure the triangles in the figure are similar to each other by SSS test of similarity. Now in figure, that is in this figure, line BC is parallel to DE and AB they have given 2, BD is what? 3, AC is equal to 4 and CE is equal to X. So we have to find out the value of X. Now in this triangle BC is parallel to DE, it is already given. Therefore AB upon BD should be equal to AC upon CE by basic proportionality theorem. So in triangle ADE, line BC is parallel to side DE, that is already given. Therefore AB upon BD should be equal to AC upon CE. Reason what you'll write? Basic proportionality theorem. Now put the values of AB, BD, AC and CE. AB is how much? 2. So 2 upon BD is how much? 3 is equal to AC is how much? 4
and CE is equal to how much? X. Now cross multiply 2 into x. 2 into x is equal to 4 into 3. Bring this 2 below this, therefore x is equal to what? 4 into 3 upon 2. It goes in 2's table, 2 2's are. So what is the value of x? Therefore x is equal to how much? 6. Now sum number 3, state whether the following triangles are similar or not. ये दो ट्राइंगल दिया है, वो दोनों सिमिलर है कि नहीं बताना है. इफ़ यस राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कौन सा टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है वो भी लिखना है. अभी उन लोग ने दिया एंगल P इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल X इज ऑल्सो इक्वल टू 35 डिग्री, यानी ये एंगल 35 डिग्री और ये भी एंगल 35 डिग्री है. उसी तरह एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल Y इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल Q भी 60 डिग्री है, एंगल Y भी 60 डिग्री है. Now prove that these two triangles are similar to each other. So in triangle PQR and triangle XYZ, तो ये दोनों ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल का नाम पहले लिखना. So in triangle PQR and triangle XYZ, angle P they have given how much? 35 degree and angle X is also equal to 35 degree. उसी तरह एंगल Q कितना दिया है? 60 डिग्री और एंगल Y भी 60 डिग्री दिया है. तो एंगल P इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल X बिकॉज दोनों का मेजरमेंट सेम है. Therefore angle P is congruent to angle X. Similarly angle Q is congruent to angle Y. Angle Q is congruent to angle Y because एंगल P और एंगल X का मेजरमेंट सेम है और एंगल Q और एंगल Y का भी मेजरमेंट सेम है. दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया. सो देयरफॉर ट्राइंगल ध्यान रखने का, जब भी लिखते वक्त ध्यान से लिखने का रहता है कौन सा ट्राइंगल जब भी सिमिलर रहता है तो वी हैव टू राइट प्रॉपर्ली. सो एंगल यहाँ पे P लिया, एक साइड में P लिया तो दूसरा साइड में P किसके साथ कॉन्ग्रेंट है? X के साथ, तो यहाँ पे X आएगा. उसी तरह Q और Y कॉन्ग्रेंट है तो Q इधर आया तो Y इधर आएगा. यहाँ पे और क्या बच गया? R, और यहाँ पे और क्या बच गया? X Y Z. So the two triangles, that is triangle PQR is similar to triangle XYZ by which test? By AA test of similarity. Similarity. So आंसर में क्या लिखने का है? The triangles in the figure are similar by which test? By AA test of similarity. Now sum number 4, if triangle ABC is similar to triangle LMN and angle B is what? 40 degree, then you have to find out angle M. You have to give reason also. Now these both triangles are similar, तो angle B का वैल्यू दिया और angle M ढूंढना है और ये B किधर है? सेकेंड है और ये M भी सेकेंड है, तो यानी angle B is congruent to angle M. Angle B is congruent to angle M. What you will write reason? Corresponding angles of similar triangle. Corresponding angles of similar triangles. Now angle B they have already given. Angle B is equal to how much? 40 degree. Therefore angle M is also equal to 40 degree. From let us take this as 1. इसको 1 लेते हैं तो यहाँ पे लिखने का फ्रॉम 1. क्यों? क्योंकि दोनों भी एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल B 40 डिग्री हो गया तो एंगल M इज ऑल्सो 40 डिग्री. Sum number 5, areas of two similar triangles are in ratio 144:49. Find the ratios of the corresponding sides. तो दो ट्राइंगल्स है, दोनों भी सिमिलर है एक दूसरे के साथ और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कौन सा रेशियो में दिया है? 144:49. तो फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड.
So let us consider A1 and A2 be the areas of two similar triangle. तो दो ट्राइंगल जो सिमिलर है एक दूसरे के साथ उसका एरियाज को let us consider as A1 and A2. उसी तरह let S1 and S2 be the corresponding sides of the two similar triangle. तो ये दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर है एक दूसरे के साथ उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स वी विल टेक इट एज S1 एंड S2. नाउ वी नो दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हाउ मच 144:49. 144 upon 49, that is already given. Let us take that as 1. Now both the triangles are similar to each other, so by the theorems of areas of similar triangle, A1 upon A2 is equal to what? S1 square upon S2 square. तो जब भी similar रहता तो we have to take this formula, that is A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. Now A1 upon A2 already we know how much it is, 144 upon 9, not 9, 49. From 1 में we had got that A1 upon A2 is what? 144 upon 49. So A1 upon A2 के जगह में 144 upon 49 is equal to S1 square upon S2 square. भाई दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालो, तो S1 square root of S1 square is what? S1, and square root of S2 square is what? S2. उसी तरह square root of 144 is how much? 12, and square root of 49 is what? 7. So taking square root on both the side, we will get what? S1 upon S2 is equal to what? 12 upon 7. So ratio of the corresponding sides of the given triangle is what? 12:7. Sum number 6, triangle PQR is similar to triangle SUV. Write the pairs of congruent angle. तो pairs of congruent angles लिखना है. Triangle PQR is similar to triangle SUV. तो अगर दो triangle similar है तो उसका corresponding angles will also be similar. That is angle P. इधर first वाला है तो इधर भी first वाला लेने का. Angle P is congruent to angle S. उसी तरह angle Q is congruent to angle U, और angle R is congruent to angle V. Angle V. Reason what you'll write? Corresponding angles of similar triangle. Corresponding angles of similar triangles. Sum number 7, triangle ABC is similar to triangle DEF. Then write the ratios of the corresponding sides. So triangle ABC is similar to triangle DEF. ये तो already given है. Therefore, the ratios of their corresponding sides are what are they? AB upon DE. Next one is what? BC upon EF, and AC upon DF. So this is the corresponding ratios of the corresponding sides if two triangles are similar to each other. Now sum number 8, in this figure TP is equal to how much? 10 centimeter. So TP is equal to 10 centimeter over here. So TP is 10, and PS is how much? 6 centimeter. So PS is equal to 6 centimeter. You have to find out area of triangle RTP upon area of triangle RPS. Now draw RE perpendicular to TS. तो RE perpendicular to TS draw करना है. अभी ये दो ट्राइंगल RTP, ये ट्राइंगल का हाइट कौन सा है? RE. वाई? बिकॉज दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल, नॉट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट हमेशा आउटसाइड रहता है. तो RE इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल RTP. उसी तरह RPS, दैट इज़ दिस ट्राइंगल, RPS का भी हाइट RE है.
तो दोनों ट्राइंगल दैट इज RTP और RPS दोनों का ट्राइंगल का हाइट सेम है. सो ट्राइंगल first you have to draw RE perpendicular to TS such that T dash E dash S triangle RTP and triangle RPS have the same height. Which height they have? RE have the same height RE. Therefore area of triangle RTP upon area of triangle RPS is equal to what? The ratio of their corresponding bases. अभी RTP का बेस क्या है? TP और RPS का बेस क्या है? PS. Triangles have equal heights. Since the heights are equal, इसके लिए ratio of the area of triangle RTP upon area of triangle RPS will be equal to what? Ratio of the corresponding bases. पहला वाला ट्राइंगल का बेस क्या है? TP और दूसरा वाला ट्राइंगल का बेस क्या है? PS. अभी TP कितना दिया है? 10 और PS कितना दिया है? 6. This is already given. Now this goes in which table? 2's table. 2 3's are 2 5's are. So area of triangle RTP upon area of triangle RPS is equal to what? 5 upon 3. Now sum number 9, ratio of the corresponding sides of two similar triangle is 4:7. Then find the ratio of their areas. तो दो ट्राइंगल सिमिलर है और उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑलरेडी दिया है 4:7. We have to find out the ratio of their areas. Let A1 and A2 be the areas of two similar triangles and let S1 and S2 be the corresponding sides of similar triangles. Now S1 is to S2 already given 4:7, that is given. So A1 upon A2 is equal to what? S1 square upon S2 square. Why? Because the triangles are similar to each other. जब भी triangles similar to each other रहता है तो we use this formula. That is reason what we'll write? Theorem of areas of similar triangle. Therefore A1 upon A2 will be equal to what? S1 upon S2 is what? 4:7. So A1 upon A2 is what? 4 square upon 7 square. 4 square is what? 16 and 7 square is what? 49. So the ratio of the areas of similar triangle is what? 16:49. Now sum number 10, write the test of similarity for triangles given in the figure. तो यहाँ पे दो फिगर दिया है और similarity लिखना है. Test of similarity for these two triangles we have to write down. Now in triangle ABC or triangle PQR, angle B is congruent to angle Q. So angle ABC is congruent to angle PQR. Why? Because both of them measure is how much? 60 degrees. So each of measure 60 degree. उसी तरह angle ACB is congruent to angle PRQ. Why? अगर देखेंगे तो दोनों एंगल सेम ही है. ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है. सो each of measure how much? 30 degree. अभी दो एंगल सफिशेंट है दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए. therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by which test? AA test of similarity.